because giving up was not an option. Welcome friends to this episode of Connecting the Dots. This is an initiative to bring to spotlight some real life heroes, the one who steered their way through rough terrains and diligently worked towards achieving their goals. Today we have one such amazing person amongst us to share her experience and motivate all of us to resiliently work towards achieving our goals. Welcome to Kripa for today's session. Thank you, sir, for having me here. Great. So as an introduction, Kripa has been a star student all through her life. Even at a graduation level, she's got a scholarship based on her performance at the class 12 level. But the turning point was when she faced two setbacks at her intermediate level exams, and in the third attempt, she cleared both the groups with flying colors. So generally, when majority of students lose focus, she paved her way through. So Kripa, today we'll talk about two things. First, we'll talk about your mantra to stay motivated. How did you kept your nerves on and kept motivated after facing the setbacks? And second, we'll talk about your preparation strategy as to how did you prepare in your first attempt and what changes did you bring about in your preparation strategy in the subsequent attempts. So first of all, one question. Kripa, you have achieved a milestone and there is a lot more to conquer as we go ahead. How are you feeling after clearing your CA intermediate? I'm really very happy. All your hard work and efforts pays off. Seeing that 4-letter word pass on your screen was a very precious moment. Right. So it's always a eureka moment. All of us work so hard day in, day night, burning midnight oil, just to see that 4-letter word pass on our computer screen. Right. So first I would like to ask you about how did you keep yourself motivated, right? Because there were a lot of uncertainties relating to COVID. I think May 20 attempt was cancelled. There was uncertainty about the November 20 attempt and you'd already given 2 attempts earlier. So how did you keep yourself motivated? So there were always mood swings, but I did small things which kept me going. Yeah, this would really help because majority of students who are not able to clear always come back to me asking, sir, now what? What changes do we bring in? And there are a lot of people who let's say get dejected, go into depression, etc. This would really help. So what strategies did you use, Kripa? So I used to write positive affirmation and visualize things. Okay. Secondly, I had a goal card where I used to target the subject-wise marks. Okay. Thirdly, I had a small group of friends who kept me motivating. Right. So 3 small things, right? It is for all of you to note, right, that she did 3 small things, but it made all the difference, right? First, she spoke about writing positive affirmations and visualization. Kripa, if you could talk a little bit more in detail, because maybe some of our viewers may not know about how to write positive affirmations and visualization. If you could, let's say, give an example, it would really help. I'm very happy and grateful for now that I've cleared. I used to visualize that after I clear, my parents would be very happy. Thirdly, I prepared my resume, that hoping that in the next attempt I will clear, and for articleship I have to forward my resume too. Right, so that's the positive attitude, right? She wrote affirmations in terms of that she was happy and grateful that she has cleared the intermediate exam. She used to visualize that how happy her parents would feel once the result is out and she would declare to her that she cleared the intermediate level. And third, it talks about her confidence about her preparation and execution in the exam. She prepared her CV and kept it ready even before the result was out, that I will have to share it once the result is out. Great, amazing. Second point, Kripa, which you mentioned was making a goal card. What is this goal card? So I used to target the marks. When in November 19 attempt, you shared WhatsApp status of all my friends' mark sheet.
Okay, so that is what I generally do, because whenever the results are out, right, I share the mark sheet on the WhatsApp status because I feel good that my students did well, and today I got to know that it motivated someone else as well. So Great. I clicked screenshot of all my friends' mark sheet, Okay. and then I targeted which subject I also can score more, and Great. targeted how much marks I can score, in which subject I can score exemption, which are my weaker subjects. I used to strategize that if in this subject I am strong, then I will at least score 70-80. And Okay, so where did you, let's say, make this goal card? On a piece of paper, on your copy? Where did you? I had a diary for writing it. Okay. For before studying for each subject, I used to see that scorecard to visualize that I will get that mark. Right. See, guys, I am telling you, this is one of the most effective method. Wherever you can, on the first page of your copy or maybe in a diary, just write your targeted score, because when you sit to study that particular subject, first look at those marks. That will give you that kick and energy to put in that extra effort to achieve those marks. Third thing, Kripa, that you mentioned, and I believe this is the most important of all, role of your friends to keep you motivated, right? Because I see with experience and with talking to people, and this happens with me as well, because there are a lot of students who, after facing couple of setbacks, lose connect with us as well, in terms of sir क्या सोचेंगे कि मैं फेल हो गया. यार, I am telling it to everybody. अगर कोई रैंक भी लाता है और अगर कोई फेल भी होता है ना, तो मैं उस यार्डस्टिक पे आपको जज नहीं करता हूं. आई नो यू एज माई स्टूडेंट. जितना प्यार मैं रैंक होल्डर से करता हूं, उतना ही प्यार अगर कोई 4 बार फेल हुआ है ना, तो उससे भी करता हूं. Don't lose connect either with your mentors or with your friends. So how important was it? So there was a phase when I disconnected with friends, but then I realized that it was not a good thing. Like friends never judge you on the basis of whether you failed or scored more. Definitely. So friends are always a blessing. They always used to motivate me that Kripa, next time पक्का हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा hard work. Yeah, because it says ना, the friends in need are friends indeed, right? So खराब वक्त में अगर कोई friend हमारा साथ छोड़ दे, तो वो हमारा friend है ही नहीं. So you used to contact your friends when you used to feel down, and they used to talk positive stuff with you, right? So अगर आप भी इस position में हो ना, अपने फ्रेंड से, अपने मेंटर्स से प्लीज कनेक्ट मत तोड़ो. दे आर नॉट जजिंग यू. ये आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो आपको ऐसा बता रहा है कि पीपल आर जजिंग यू, बट नोबडी इज डूइंग दैट. एवरीबडी लव्स यू एज मच. कोई रिजल्ट थोड़ी ना यार डिसाइड करता है कि वेदर आई रिस्पेक्ट यू और लव यू और नॉट. प्लीज आस्क फॉर हेल्प. प्लीज स्टे कनेक्टेड. आप जितना कनेक्टेड रहोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो 3 important thing, small but very effective. कृपा को इसने हेल्प किया है, एंड आई एम श्योर आप सबको भी ये हेल्प करेगा. सी, लूजिंग आउट इज नॉट एन ऑप्शन, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन. आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते ही रहना है. सो डिड यू एवर फील कि मैं गिव अप कर दूं? नहीं, बिकॉज गिविंग अप वाज नॉट एन ऑप्शन. राइट. अभी हम क्या करते हैं ना, थर्ड एस्पेक्ट पे बात करते हैं, विच इज योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. पहले हम बात करेंगे कि जब आपने इनिशियली ट्यूशंस लिए थे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तब आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था, एंड देन सब्सिक्वेंटली सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जब आप अल्टीमेटली क्लियर किए, तो आपने क्या चेंजेस किए अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में. सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ट्यूशंस के साथ नहीं पढ़ाई किया था, लेकिन देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी. दिस इज द फैटल मिस्टेक. ज्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना, और जो स्टूडेंट पास होते हैं, उसमें डिफरेंस यही होता है. आई कीप ऑन सेइंग एवरी टाइम, राइट, एवरी टाइम आई कीप ऑन सेइंग कि ट्यूशंस करने से कोई फायदा नहीं है अगर आप साथ साथ सेम डे में उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो. अगर आप ये कर रहे हो ना, आई कैन गारंटी यू इट इंक्रीजेस योर चांस ऑफ पासिंग बाय 99%. राइट. देन गो अहेड कृपा. Then I analyzed my mistake, called for RTI copies, and analyzed where I went wrong, where did ICI cut my marks, and tried to improve that point. Okay, आपने जो RTI की बात की ना, एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, which I feel which happens with most of the people. जैसे ही हम हमारा रिजल्ट देखते हैं और फेल आता है ना,
डिजेक्टेड होकर फिर उसको एनालाइज ही नहीं करते. वी डोंट सी किसमें ज्यादा आया, किसमें कम आया. सो इज इट इम्पोर्टेंट टू एनालाइज योर मार्कशीट? हाँ, हमें तो हर टाइम लगता है कि वी नेवर गो रॉन्ग. राइट. सो एक बार अपना कॉपीज मंगवाने से क्या होता है कि पता चलता है कि कहाँ हम लोग का मिस्टेक्स हुआ, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट वी कैन इम्प्रूव दैट पॉइंट. राइट. और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेरे को बताओ कि बहुत बार कुछ लोगों का थ्योरी स्ट्रांग होता है, कुछ का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, एंड द एग्जाम फॉर्मेट ऐसा है ना कि आपको लेट्स से सारे सब्जेक्ट्स में पास भी होना है और कट ऑफ जो 200 मार्क का थ्रेशोल्ड है वो भी क्लियर करना है. तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज की थी? सो इन माई November 20 अटेम्प्ट एग्रीगेट भी नहीं आया था और 1-2 सब्जेक्ट्स में आई डिडंट पास. सो माई फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज जिसमें मैं वीक हूँ एटलीस्ट 40-50 आ जाए, और जिसमें आई एम स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट एग्जामिशन से मोर देन एग्जामिशन, सो दैट एग्रीगेट के लिए मेरा अटेम्प्ट क्लियर ना हो, ऐसा ना हो. और आपने लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, बिकॉज यू सेड दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने साथ साथ पढ़ाई नहीं की, तो मे बी जो प्रेपरेशन था वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था. फिर यूजली सीए एग्जाम में क्या होता है कि आपको रिजल्ट मिलता है, उसके बाद फिर 3 महीने बचते हैं प्रेपरेशन के लिए. तो उस समय में जो 3 महीने होते हैं, आप किस तरह से प्लान किया अपने प्रेपरेशन को? मतलब पहले फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, या दोनों सब्जेक्ट साथ साथ? हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग इट? First, I analyze which group I'm in which group I'm strongest. Okay. Like, and I targeted that ये group, all subjects ये group के पहले complete करने, उसके बाद second group का देखेंगे. Like, I was strong in first group 1. So first I started with group 1, started preparing for group 1, like one practical and theory subject, and then I used to write mock tests for practical papers, and for theory subjects I used to recall. I didn't revise it, because अगर रिवाइज करेंगे तो लगेगा ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन बुक बंद करके फिर रिकॉल करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ नहीं आता मुझे. राइट, वेरी गुड. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई. यू नो दी कॉन्टेंट्स. बुक बंद करो, एक माइंड में रिवीजन चालू करो देखे बिना, बिकॉज जब देखोगे ना तो वो तो कनेक्ट होने लगेगा, बट देखे बिना मे बी ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा, अगर उस तरह से करने की कोशिश करेंगे ना, दैट विल डेफिनेटली वर्क. एंड कृपा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट? मतलब आइदर ICI ले या कोई टीचर ले, वो मॉक टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है? Mock tests are very important. So for practical subjects, like my speed was slow. I got to know about it in my first and second attempts. Like in account subject, I always used to write slowly at the starting, and 20 marks तक छूट ही जाता था. ये बहुत लोगों के साथ होता है. Then how did you work upon it? So after writing mock test, like giving 3 hours time, that ये 3 hours में पूरा पेपर कंप्लीट करना है. So इससे पता चलता है कि कैसे स्ट्रैटेजी करना है, लाइक पूरा 3 आवर्स में कैसे फ्लो रहेगा, और स्टार्टिंग से ही जल्दी लिखना है. राइट. सो अगर इसको कृपा हम समराइज करें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी थी, सबसे पहला अपने रिजल्ट को एनालाइज करो, सब्जेक्ट वाइज देखो कि कहाँ पे आपने कितना स्कोर किया है. उसके बाद अब अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मे बी आप एग्जामिशन से ऊपर जाने की कोशिश करो. वीक सब्जेक्ट में मे बी 45, 50, 55 का टारगेट करो कि भाई एटलीस्ट पास तो होना ही है. तो एग्जामिशन मिला है तो एग्रीगेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पास हो गए तो ओवरऑल ग्रुप निकल जाएगा. तो ये स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया. फिर आपने बोला कि रिवीजन को प्लान करो. पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिक्योर कर लो, राइट, उसके सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लो, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जाओ. एंड देन फाइनली मॉक टेस्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट मोर देन एनीथिंग एल्स, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं. सो होप ये जो स्ट्रैटेजीज कृपा ने शेयर की, बोथ इन रिलेशन टू स्टेइंग मोटिवेटेड एंड इन रिलेशन टू इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, आपको हेल्प करेगी. नाउ इट्स all happy moment for all of us. Kripa has cleared. So how do you feel now? मतलब आपका future plans क्या है अभी? Where do you look upon from now? So अभी तो firstly I will try to get into good firms, because जितना पढ़ा है practically implement भी करना है. So looking forward for good firms and great. So ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अभी students have let's say realize the importance of articleship.
कि भाई जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्लियर होना है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है. बिकॉज जो सीखा अभी टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इतनी सारी चीजें तो सीख ली है. जब भी पढ़ाते हैं हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये काम आएगा काम आएगा. नाउ यू विल गेट टू नो कि ये किस तरह से काम आएगा, राइट? सो गुड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप के जल्दी से आप अपना सीए फाइनल क्लियर करो, वापस हम एक इंटरव्यू करें, वहां पे गाइड कर पाएंगे एंड देन वील कीप दिस लेट्स से कनेक्शन ऑन. फिर आप जब कोई कॉर्पोरेट में जाओगे वील अगेन हैव यू ऑन कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, राइट? बिकॉज ट्राइंग टू कनेक्ट, बिकॉज ये सीरीज का नाम हमने क्या रखा है, कनेक्टिंग दी डॉट्स. तो एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट होगा और चेन बनेगा, तभी सबको जाके हेल्प मिलेगी. तो बेसिकली ये जो सीरीज हम कर रहे हैं ना, एज आई स्टार्टेड ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट सम रियल लाइफ हीरोज, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, ऑल ऑफ अस आर हीरोज इन आवर ओन लाइफ, राइट? हमें सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने खुद के लिए हम परफॉर्म करें टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज. एंड बहुत बार हमें मौका मिलता है, कृपा वॉलंटियर्ड के भी मैं बताना चाहती हूँ मेरी जर्नी, कि किस तरह से मेरी जर्नी रही, सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प मिले. तो बहुत बार हमें ये भी मौका मिलता है दैट वी इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द अदर्स. सो ये जरूर हमें करना चाहिए. एंड बाय दिस लेट्स से इनिशिएटिव, अभी आपको अपने स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिखेगा, राइट? इस ईमेल आईडी पे अगर आप कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, राइट? दिस इज अ ग्रुप विच विल बी मैनेज बाय मी एंड माय स्टूडेंट्स, जो कि मे बी फाइनल में है, क्लियर हो गए हैं, इंटर क्लियर कर ले, एनी सॉर्ट ऑफ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, आप हमें मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो. वील कन्वर्ट इट इनटू अ ग्रुप, आपको हम हेल्प करेंगे सो दैट आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सको. एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आप मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे, सर हम भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट? कृपा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गोइंग अहेड and may you clear final as well with flying colors. Thank you so much, sir. Great guys, thank you so much.